it, it said that I have to analyze, ma'am, but I have checked my database and also the website. There are only 3 HRX products. I have to analyze only those 3 products. Only 3 HRX product. Have you checked for Myntra's product? I mean Myntra's site. Ma'am, Myntra site, you told only your shop site, right? Or I have to check other site also. Right now you are working on which particular statement? Task 7. That I task understood. is Please tell me the statement. analysis Yeah. of We had cost checked less your than shop site 500. for HRX product, right? We are having only 3 Yes, products. sir. That is, I mean, some T-shirts only. Don't go with, Yes, ma'am. your shop site. You please refer the proper site of HRX like Flipkart you can take, or you can take Myntra. Don't go with Okay, your ma'am. shop's product. Ma'am, and for the task 8 also same thing. I have to check another Which one site analysis? from your shop site there. Task 8. Task 8. What is the statement in task 8? Ma'am, prepare data set for mobile phones having price less than or equal to rupees That 10,000. is also from other sites, not from your shop. Okay, ma'am. Because we are already having our data, we need not to do the analysis of that. No, actually, you should check out what other mobile phones are there in the market, which are having very good features. Like you can include the features like RAM, Okay, processor, ma'am. camera, whatever features of mobiles are there, you please include them as a feature variable, as a column. Okay, and please try to Okay, find ma'am. out the mobile phone that is excelling in all the features. Okay, Okay, ma'am. like in And top. from any other site, I can take the data and analyze it, right? Yeah, other sites you have to choose like Amazon, Flipkart, or any other shopping sites, Okay, ma'am. e-commerce sites. Okay. Only where I have mentioned YoShop, take data Okay, from ma'am. Task 6. yoshop.com. Take data from yoshop.com. Otherwise, you are free to go to any other site. Okay, ma'am. Okay. Yeah. After Shubhadeep, Ma'am, Sagar, and you want to ask something? You have raised your hand. Yes, Sagar. ma'am. I want to ask. Hello. Yes. Am I audible? You're audible. Ma'am, I want to ask just one question. Do we have to do the daily task, or we can just complete the projects we are given We are giving you on a small do that task and for we can each go and for every day, not a single project. Okay. no right in every day we used to Your give our voice is access to not some. clear, Sagar. Yes. मैम am I audible right now? Yeah, you are audible. मैम मैं खाली एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ कि हम लोग को जो एक पर्सनल प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें हम लोग को पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना Yes. है, हम लोग खाली डेली का टास्क दे रहे हो, वो अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं, आपको डेली क्या करना है, आपको इसी टास्क से रिलेटेड सब टास्क करना है। क्योंकि देखो, आज आपने डेटा को क्लीन किया, ठीक है, कल आप उसका एनालिसिस करोगे, दूसरे दिन अगला एक्सेल शीट लोगे, उसको क्लीन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप 1-2 दिन में पूरा खत्म कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप अगले टास्क पे वर्क करना शुरू कर दो, आप पूछो अगले टास्क के लिए, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? जो प्रोजेक्ट दिया था वो हो चुका है, तो फर्स्ट यस मैम, टास्क वो आपका लोग हो जो चुका है। ओके, मैं आपको सेकंड टास्क भेज दूंगी। आपका कौन सा, आई मीन आपका ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 18 मैम। 18 ग्रुप। ओके, मैं अभी आपको सेकंड टास्क भेज देती हूँ, आप शुरू कर दो उसके ऊपर काम। जी मैम, वो पर्सनल वाला जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब सेकंड डे भी ठीक कंप्लीट है, कर लेता हूँ। मैं आपको अभी भेज जी देती हूँ, 1 मिनट, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी मैम।
ये जो सेकेंड टास्क है ना, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जो भी सेकेंड टास्क कर रहे हैं ना, आप सारे कॉलम्स मत लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप Okay, ma'am. डेटा सेट को लोगे, ओके, और उसमें से सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म मोड में डालना, डायरेक्टली लोड मत करना, ठीक है। जब आप डायरेक्टली लोड करोगे यू विल फेस एन इश्यू, क्योंकि ऐसे कुछ कॉलम्स है जिनका कॉलम हेडर ही नहीं है, तो वो लोड नहीं होगा, ठीक है। Okay, ma'am. ऐसे करप्टेड डेटा आपको मिलेगा तभी आप सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अगर आपको पूरा बढ़िया डेटा मिलेगा ना, तो यू वोंट बी तो नहीं, एबल टू लर्न इट, जी मैम। ठीक है। Okay. आपको अभी भेजती हूँ। जी मैम, आप भेज दीजिए, मैं उसको कंप्लीट करके, मैम ये जो है, जो मैंने पहला कंप्लीट कर लिया उसको मैं आपको कैसे फॉरवर्ड करूँ? वो मेरे मेल में आप फॉरवर्ड कर दो। आप ऐसा करना, आप है ना मतलब एक फोल्डर मैम में, आप फॉरवर्ड, मैं बताती हूँ, एक मिनट। एक फोल्डर में अपना जो पीडीएक्स फाइल है, आपने जो पावर बीआई पे काम किया है, उस फाइल, उसे जब आप सेव करोगे तो एक पीबीआईएक्स फॉर्मेट फाइल में सेव होगा। और अगर जी आप मैम। फाइल में जाके उसे एक्सपोर्ट करोगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप ऐसा करो, आपके टास्क से रिलेटेड जो भी आपने पीबीएक्स फाइल और पीडीएफ फाइल, जो दोनों चीजें आपने बनाई है, वो एक फोल्डर में डालो। उस फोल्डर को अपने ड्राइव में अपलोड करो, ठीक है। जब वो अपलोड हो जाएगा, आप उसे जब खोलेंगे तो सर्च बार में आपको एक लिंक मिलेगा, ओके। उस लिंक को आप है ना मुझे भेज देना। मैं अपना मेल आईडी अभी चैट बॉक्स में डालती हूँ, आप उसमें भेज देना। और एक और बात, आप मुझे वो एक्सेस करने के लिए अलाउ करना। वो आएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आप मतलब ये एक्सेस अलाउ करना चाहते हो कि नहीं, तो वो एक्सेस अलाउ कर दो, तभी मैं खोल पाऊंगी उसे, ठीक है। ठीक है, ओके। रेम्या एट योर शॉप थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि बाकी में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। आप योर शॉप से भेज देना। यस, मणिकंदन, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am. यस, Ma'am, I have sent the task one yesterday evening 3 o'clock शुभम, at वेट yours. वेट मणिकंदन, शुभम प्लीज म्यूट योर ऑडियो। ओके, हाँ मणिकंदन, व्हाट हैपेंड, Yes, व्हाट यू ma'am. वांट टू से? Ma'am, I sent the task one, ma'am, yesterday evening ओके, 3:45. ओके, Your shop's mail ID. ओके, ओके, यस। Ma'am, can you check once my task again? I sent you a 40 number. चेक वन बाय वन। Manigandan, good, but one more thing is that you should put some insight. From next task onwards, you should, whatever you found out from it, you please mention it in a text box, okay? For first task, Okay, it is ma'am. okay. Okay? Okay, ma'am. Good work. Okay. Keep it up. Thank you. Welcome. Hello, ma'am. Wait, wait, wait. Ma'am, you said first to me. ये बस check कर लीजिए आप. हाँ, एक मिनट, अभी वो मणिकंदन का मुझे अपडेट करना है, उसके बाद मैं आपका भी कर दूंगी। Okay, who is next? Ma'am, Yeah, Yashna. ma'am, I have submitted. Yes, ma'am, I have submitted my task 6 on 15th night. Okay. Personal mail ID, right?
Yashna, India. After Yes, ma'am. yeah, you have included India in the shipping country. We are asking about international orders now. Don't include India in it. Okay. You remove India from that. Okay. IND. Okay. Fine. Okay. Okay. Regarding unusual orders, what is the cutoff that you have taken? Yashna, 15,000. not 15, 50, Hello? 50, Yes, ma'am. 15,000. 50,000. 50. Yes, yes. Okay, fine. Okay, thank you. Okay, welcome. Yeah, and regarding multiple orders from same hello? address. Wait. Hello? Count. Okay, Yashna, please edit it little bit and send it to me later. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will note the link right now.